Hello students, we are back and today we are doing the poem Animals. This poem comes in the 10th standard higher level English medium SSC board textbook. We have finished Joan of Arc last time and after that is the poem Animals. So before I begin the poem, I would like to tell you something about the poet Walt Whitman. The poet Walt Whitman was a major figure in the early American poetry. He is a very important person. This is his birth and death year. In an age when all poetry was rhymed and metrical, where all the poems had rhyming words, rhyming words are words that come in the end, you all know that. Whitman made a break with traditional and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. So this is a very important way to remember for us that he wrote a poem in free verse. Means his poem had no rhyming words. It had definitely no rhyming scheme. He was a non-conformist in all respects, including his social life. The poet tells us he feels more at home with animals. So he feels more comfortable with animals than with humans. Very important point. What he finds complicated and false. So humans are what he finds complicated and false. First, let me show you a video on the biography of Walt Whitman. Walt Whitman was the man who revolutionized American poetry. He invented a whole new poetic form, and he opened up topics to a wide range that nobody else would touch. So because the accent here is a little difficult, I will explain it to you. Walt Whitman, he opened a different range of poetry altogether. He started writing on such topics. ऐसे topics पे लिखते थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था. जैसे animals, किसी ने सोचा है animals और human being के साथ compare करना. So ये जैसी poem है इनकी animals, इन्होंने लिखा है कि animals human being से ज़्यादा better हैं. वो उनकी तरह complicated और झूठे नहीं हैं. So of course poem पढ़ेंगे तब और समझेगा. But this was what he's saying. Whitman was born on May 31st, 1819, in West Hills, New York. He was born on May 31st, 1819, in New York. His parents were of modest means, and he had 7 siblings. At the age of 11, He had 7 siblings, means 7 भाई बहन थे उसको. Whitman was pulled from school so that he could help the family support itself in the printing industry. As a result, Whitman जब 11 साल का था तब उसने पढ़ाई छोड़ के प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जॉब करने लगा ताकि अपने सब फैमिली को सपोर्ट कर सके. दैट्स व्हाई आई स्ट्रेस्ड ऑन द पॉइंट 7 सिबलिंग. मतलब एक मम्मी पापा को 7 भाई बहन हो तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा फैमिली चलाना. was largely self-taught. He became a voracious reader. He read widely, especially in novels. When he was 17, Whitman turned to teaching, and his first job was in a one-room school. जब 17 साल का हो गया तब वो टीचिंग करने लगा. He became a teacher. He started teaching in a school. He taught for 5 years, and then in 1841, he set his sights on journalism. Walt Whitman was a volatile editor and writer. He had strong ideas about women's property rights, about immigration, and about the major issue of the day, slavery. From 1848 to 1855, Whitman began what was to become his greatest work, Leaves of Grass. His free verse, his stitching together of encyclopedias. See, अब ये लोग कह रहे हैं उन्होंने बाकी उसका पूरा 17 years के बाद he started doing more of writing and he was an editor. He was a good editor and he wrote poems. Leaves of Grass was one of his famous poems. And they also said free verse. He wrote poems in free verse. That means at that point, writing in rhyming scheme was a normal pattern, but he broke that tradition and he started writing in free verse. Free verse means the poem had no rhyme scheme. Lists completely broke with poetic and literary convention and vastly influenced poets ever after across the world. It began as a book of very few poems and grew to one over the years to contain almost 300 poems. Over his lifetime, he wrote 300 poems. He had 7 editions of the book. During the Civil War, Whitman moved to Washington, D.C. to attend his wounded brother George.
He stayed in D.C. several years, working in the paymaster's office and volunteered, visiting wounded soldiers. When he went to the hospitals, there were limbs piled up outside. He spoke with young soldiers who had witnessed the most astonishing atrocities. सो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो वॉशिंगटन चले गए अपने भाई के पास, जॉर्ज के पास, भाई उसका उधर था। तो उसने देखा उधर वॉर के समय कैसे हॉस्पिटल्स में सब पड़े हैं सोल्जर्स, उनके लिम्स सब एक साथ, लड़ाई के वक्त कैसे हाथ टूटता है, कभी पैर टूटता है, तो वो सब एक साइड पे सब जमा हुए हैं। तो उसको देख के दुख होता था सोल्जर्स के लिए। From his experience with the wounded during the war, he produced a small book of poems called Drum Taps. This is one of the only 2 accounts of the Civil War written by. तो इनकी सिचुएशन देख के, उन पे दया करके उसने एक बुक लिख दी पोएम्स की, एक बुक फुल ऑफ पोएम्स ही रोट ऑन द सोल्जर्स। People who actually experienced it. Whitman published 2 new collections of poems in 1870, Democratic Vistas and Passage to India. Whitman was called the Bard of Democracy because all of his poems are based on the notion of a universal brotherhood. He thought that the possibility of America was to achieve a brotherhood that no other. उसका एम था यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब पूरी दुनिया में भाई बंधु रिलेशन बना रहे, यूनिटी बनी रहे। culture had yet been able to achieve. Whitman suffered a stroke in 1873, leaving him partially paralyzed. He moved to Camden, New Jersey, where he remained until his death on March 26, 1890. फिर उनको एक स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक काइंड ऑफ आ गया उसको बीमारी, और फिर उनका डेथ हो गया। एंड नाउ वी शैल मूव टू हिज पोएम एनिमल्स। So in this poem Animals, the poet is saying, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. Look at this word. Placid and self-contained. So he is saying, काश नहीं, I think मतलब शायद, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके जानवरों के साथ रहूँ, क्योंकि जानवर कितने प्लेसिड हैं। प्लेसिड मतलब जल्दी गुस्सा नहीं होते, जल्दी चिड़चिड़ नहीं करते, जल्दी अपसेट नहीं होते, और कितने सेल्फ कंटेंड है, सेटिस्फाइड है, अपने खुश है अपनी ज़िंदगी में। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं लंबा देर तक खड़े रह के एनिमल्स को देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट मतलब पसीना नहीं बहाते, बड़बड़ नहीं करते, वाइन कंप्लेन नहीं करते अपनी कंडीशन के बारे में, अरे मेरे पास ये नहीं, अरे मेरे पास वो नहीं, अरे इसने ये बोल दिया, अरे इसने वो बोल दिया, ऐसे नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। वो लोग अंधकार में नहीं हैं। दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अपने पाप के लिए रोते हैं, अरे मैंने आज ये पाप कर दिया, अरे आज मैंने वो पाप कर दिया। वो ऐसा सिचुएशन नहीं है, उनका नेचर ऐसा नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। मेक मी सिक मतलब मुझे चिढ़ नहीं मचाते वो लोग। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी, अरे ये भगवान के लिए करना चाहिए, अरे ये ऐसा करना चाहिए, अरे ये वैसा करना चाहिए, ऐसे पकाते नहीं हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ना एक जानवर है जो डिससेटिस्फाइड है, सब सेटिस्फाइड है, अपने पास जो भी है उसके साथ वो लोग सेटिस्फाइड है। कोई भी ऐसा नहीं है जो डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड, डिमेंटेड मतलब, और पागल नहीं है वो। मेनिया, क्रेजीनेस, मेनिया मतलब क्रेज़ है हर चीज़ ओन करने का। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फ्रिज चाहिए, कबर्ड चाहिए, एसी चाहिए, ओनिंग थिंग्स। नॉट वन नील्स टू अनदर। मतलब ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, स्पेशली बॉस एंड एम्प्लॉई, या कोई पैसे वाला और मिडिल क्लास, ऐसे तो वो कैसे होता है, एक आदत होती है। बड़े लोगों को थोड़ा बटरिंग मस्का मारी करते रहते हैं, तो एक दूसरे को झुकते नहीं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ डील करते हैं।
nor to his kind that lives thousands of years ago. तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी. इधर रिस्पेक्टेबल का मतलब है टू मच हैप्पीनेस. इधर इस पोएम में रिस्पेक्टेबल का मतलब अलग है कि कोई कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं है, कोई कुछ ज़्यादा ही दुखी नहीं है. ओवर द होल अर्थ न्यूट्रल बैलेंस्ड है उनकी फीलिंग्स. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. और ऐसे उनके रिलेशंस हैं और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स मीन्स वर्च्यूज़. इस पोएम में टोकन्स मतलब गिफ्ट्स की बात की गई है जो हमको भगवान ने दी है. दया, कंपैशन, अप्रिसिएशन, पॉजिटिविटी, ये सब. दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. एविंस मतलब दे शो. उनके बिहेवियर में वो नेचुरली शो करता है. काइंडनेस, जैसे इंसानों में जलन होती है, जलते हैं एक दूसरे को देख के. कंपैरिजन है, एनवी, ये सारा झूठ बोलना, ये सब क्वालिटीज़ हैं. तो एनिमल्स में वो नहीं है. एनिमल्स में वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं. वो कंपैशनेट है, काइंड है, सिंपल है, और वो एनवी और ये सब के इसमें नहीं. दे शो देम मेनली इन देयर पोजेशन. आई वंडर वेयर दे गॉट दीज टोकन्स, वेयर दे गेट दीज टोकन. कि इन लोग को कहाँ से ये सब वैल्यूज़ मिले, इनको कहाँ से ये सब फीलिंग्स, ये सब expressions मिले. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? जब मुझे भगवान ने ये सारी क्वालिटीज़ दी है तो मैंने क्या उनको नेग्लिजेंटली मीन्स अनदेखा करते हुए गिरा तो नहीं थी कहीं. सो दिस इज़ व्हाट द पोएम इज़ अबाउट. द होल पोएम, पूरी पोएम में पोएट ने कहा है कि एनिमल्स इंसान से ज़्यादा अच्छे होते हैं. लेट मी टेल यू how the poet has narrated this poem. Give me a minute. Here is the summary of the poem Animals by Walt Whitman. Whitman wants to live with animals. He believes, unlike humans, animals are calm and controlled creatures. He admires animals and believes he can look at them infinitely. In the next lines, Whitman corroborates this idea by listing different ways in which animals are different from human beings. Animals, unlike humans, do not complain about their life or situation. They do not cry over the sins committed by them. They also do not make the poet sick with their discussions on what is the right kind of duty to God. Animals, Whitman believes, are not dissatisfied creatures. They, unlike humans, do not get mad over their desires to own things. Animals do not subjugate oneself to another, nor do they bow and worship humans who had lived a long time ago. Animals, Whitman finally says, do not care about being respectable nor understand the concept of unhappiness. So, through the list of differences, Whitman is highlighting the self-imposed restrictions of humankind. The poet then expresses his acceptance of animals who show only their true selves to the poet. Through watching animals and their true selves, Whitman gathers pieces of himself which have been lost by living in the society. Whitman wonders how animals could possibly have pieces of himself. He wonders if he passed them by ages ago and carelessly dropped them. Thus, in the final 4 lines, Whitman explores the possibility that animals currently possess what humankind did at some point, natural virtues which have been lost as civilization progressed. It is also a reflection of how an individual loses his or herself when trying to conform to a society focused on appearances than natural human virtues. Okay, and I shall see you next time.